गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए सीबीएसई क्लास 10th के साइंस से चैप्टर 9 जिसका नाम है बच्चों लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से आज हम 5th प्रैक्टिस लेक्चर आपको कराने जा रहे हैं। तब तक आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस of 45 degree, the refraction angle in two transparent media P and Q is 20 degree and 30 degree respectively. Which of the two is optically denser? इन दोनों में से कौन जो है वो optically denser है and why? You have to explain this. तो बच्चों क्वेश्चन है कि for the same angle of incidence two transparent media है, that is one is transparent media, this is P, other transparent media is Q. Okay, और दोनों के लिए angle of incidence कितना है 45 degree. This also have 45 degree. Okay, and the refraction एंगल इन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये अलग मीडिया है Q और P अलग मीडिया है, और P में जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो है आपका 20 डिग्री. दिस इज व्हाट 20 डिग्री. ओके, इसमें जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो दिस इज 20 डिग्री का रिफ्रैक्शन एंगल है 20 डिग्री, और इसमें जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो दिस इज योर 30 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल. ये R एंड दिस इज ऑल्सो R, रिफ्रैक्शन एंगल R. अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर एंड व्हाई. दोनों में से कौन ऑप्टिकली डेंसर है? तो बच्चों P, यू नो P हियर क्या है, P हैज ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी. P की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा है देन Q. Q के तुलना में P की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है बिकॉज इसमें ज्यादा बेंडिंग हो रहा है नॉर्मल की तरफ. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस इन P एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर इन Q. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है P में कम है एंड Q में ज्यादा है, एंड शोइंग दैट मोर बेंडिंग ऑफ लाइट. इन केस ऑफ P एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मोर रिफ्रैक्शन हियर इन केस ऑफ P. एक्चुअल लाइट हैज टू गो दिस वे. यहां देखिए 25 डिग्री से यहां से बेंडिंग हुआ है और हियर 15 डिग्री. एक्चुअली लाइट हैज टू गो दिस वे एंड यहां 15 डिग्री का बेंडिंग हुआ है. यहां पर बेंडिंग कम है, यहां पर बेंडिंग ज्यादा है. तो ये चीज यहां पर है कि P हैज ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी देन Q बिकॉज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस इन P. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो P में कम है, शोइंग दैट मोर बेंडिंग ऑफ लाइट हैज टेकन प्लेस इन मीडियम P. मीडियम P में ज्यादा लाइट का बेंडिंग हुआ है. ओके, दैट इज यू कैन राइट दैट P हैज ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी. आंसर कैसे लिखेंगे? P में जो है ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी है. आंसर इज P हैज ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी, ग्रेटर optical density than Q because the angle of refraction is less in P, showing that more bending of light, more bending of light has
taken place in medium P, taken okay. So P has greater optical density because the angle of refraction is less in P. P में जो angle of refraction है 20 डिग्री है, जो कि कम है Q के तुलना में जिसका angle of refraction 30 डिग्री. Okay, this is the answer for the question first. And second question here आपको दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन है इन डायग्राम. देखिए ये डायग्राम गिवन बिलो शोज एन ऑब्जेक्ट ओ, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओ को दिखा रहा है और उसके इमेज आई, ये दोनों चीजों को दिखा रहा है. इन डायग्राम गिवन बिलो शोज एन ऑब्जेक्ट ओ, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ. ओके, ऑब्जेक्ट है ये एंड इट्स इमेज आई, इसका इमेज जो है ये आई है, इमेज आई, इट्स इमेज आई. विदाउट एक्चुअली ड्रॉइंग द रे डायग्राम, बिना रे डायग्राम को ड्रॉ किए स्टेट द फॉलोइंग टाइप, स्टेट द फॉलोइंग, आपको बताना है किस तरह का ये लेंस है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के रूप में. तो फर्स्ट दिस इज ए कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. तो आंसर है फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट, दिस इज कन्वर्जिंग. ये एक कन्वर्जिंग नेचर का लेंस है बिकॉज इट कन्वर्जेस द रे ऑफ लाइट. फर्स्ट दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. ये एक कन्वर्जिंग लेंस है. ओके, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के रूप में बताना था. नेम टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर सच एन इमेज इज ऑब्टेन्ड. दो ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जहां पर इस तरह का इमेज ऑब्टेन होता हो. तो एक दो इंस्ट्रूमेंट कहां कहां आप देखेंगे. एक हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो बनता है इमेज, वो इसी तरह से बनता है. एंड सेकेंड मैग्नीफाइंग ग्लास यूज्ड बाय पामिस्ट, जो पाम को देखते हैं ज्वेलर्स, इनके द्वारा. तो दो इमेज, फर्स्ट दिस इज सेकेंड की नेम टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर सच एन इमेज इज ऑब्टेन्ड. दो ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जहां इस तरह के इमेज बनते हैं. तो दिस टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप. ए, दिस टाइप ऑफ इमेज इज obtained by simple माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज ऑब्टेन होता है. बी, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज्ड बाय पामिस्ट लोग या ज्वेलर्स लोग इस मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं. मैग्नीफाइंग ग्लास यूज्ड बाय पामिस्ट. मैग्नीफाइंग ग्लास किसको, जो पामिस्ट लोग यूज करते हैं, या ज्वेलर्स इस्तेमाल करते हैं. दिस इज एंड वॉच रिपेयरर्स ऑल्सो. थर्ड, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज formed if this lens is replaced by concave mirror. ये लेंस किसके द्वारा रिप्लेस हो गया है, कनकेव मिरर के द्वारा अगर रिप्लेस हो जाए. सपोज दिस लेंस इज रिप्लेस्ड बाय concave mirror of focal length f and object is placed at a distance of f by 2. This lens is replaced by your concave mirror
एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाए, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जा रहा है आपका, दिस इज f/2, फोकल लेंथ का आधा। तो उसके केवल कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं। तो बच्चों ये जब मिरर कॉन्केव लेंस कॉन्केव मिरर के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, तो यू नो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। ओके, सो दिस विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। वो इमेज इरेक्ट होगा, लार्जर होगा, दैट इज मैग्निफाइड होगा। ओके, अब इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको लिखने हैं। तो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज। तो थर्ड का आंसर क्या हुआ? थर्ड इज three characteristics of the image formed if lens is replaced by concave mirror of focal length f, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहां से, इसका कर्व, इसका फोकल लेंथ है f, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है f/2 डिस्टेंस पर। तो इससे जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ओके, पीछे बनेगा वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, ओके, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और मैग्निफाइड इमेज बनेगा। क्योंकि कंकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इट इज द ओनली पोजीशन ऑफ ए कंकेव मिरर। ये कंकेव मिरर का केवल एक ऐसा पोजीशन है पोल और फोकस के बीच का, जहां पर केवल वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर ही ऑब्टेन्ड होगा, और वो इरेक्ट होगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफाइड होगा। सो दिस इज द आंसर। इसके आंसर्स को हमने यहां पर लिखा है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड। ओके, अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका। थर्ड क्वेश्चन is state the law of refraction. You know law of refraction. Law of refraction is also important question of your reflection and refraction chapter. Laws of refraction. इसी में है आपके Snell's law. लॉज ऑफ, आपको एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देयर आर टू टर्म्स इन दिस लाइट चैप्टर, इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो second question is, third question, now this is third, state laws of refraction of light। लाइट के रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद आपको एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टर्म को एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव index of a medium and write an expression to relate it। और आपको लिखना है एक्सप्रेशन जो कि रिलेट करे विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, विद
the speed of light, the speed of light in vacuum, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के तुलना। ओके, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जिस तरह से रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में वी हैव स्टडीड, रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Similarly you have to explain the law of refraction. Incident ray यहाँ पर reflected ray ना होकर refracted ray होगा, that is incident ray, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. This is the first law of refraction. There are two laws of refraction, there are two laws of reflection also. Reflection और refractions के दो नियम हैं। तो चलिए चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या है कि इन द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और सेकंड लॉ इसका कहता है कि रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ओके, these are the two laws of refraction. चलिए रिफ्रैक्शन की तरफ अब, तो रिफ्रैक्शन में क्या है कि दी आंसर फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के दो नियम, फर्स्ट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, all lie in the same plane। तो फर्स्ट लॉ रिफ्रैक्शन का, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Second is the ratio of sin I to sin R. Sin I to sin R, each constant for the light is constant for the light, constant for the light of a given color of a given color for a given pair of media, for a given pair of media, for a given pair of media के लिए ratio of sin I to sin R is always constant for a given color. Okay, these are the two laws of refraction। और यहाँ पर लिख सकते हैं n1 sin R is equal to n2 sin n1 sin I n2 sin R, and here sin I upon sin R is equal to n2 upon n1, that is refractive index of 2 with respect to 1, that is refractive index of n to 1। this constant, ये constant है, this constant value
This constant value, this constant value is the refractive index, is the refractive index, refractive index of the second medium, of the second medium with respect to first. ओके, दिस इज, ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट. दिस इज व्हाट n2 अपॉन n1. तो अब जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बात कहा जा रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन. अब एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको एक्सप्लेन करना है. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, this we have explained. You have medium and write the expression to relate it. Absolute refractive index. Now, the absolute refractive index of medium, you have to define the absolute refractive index of the medium. Absolute refractive index of medium, that is, this is nm is the absolute refractive index of medium, is the ratio of speed of light, is the ratio of speed of light, speed of light in vacuum to the speed of light vacuum in medium speed of light of the medium. This is the speed of light in vacuum, that is c is the speed of light in vacuum to the speed of light in medium light, that is refractive index of medium is equal to speed of light in vacuum to the speed of light in medium. speed of light vacuum में c से रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियम में vm. दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक स्पीड होगा लाइट का ऊपर और मीडियम में लाइट के स्पीड के रेशियो को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन वी हैव speed of ratio of speed of light in vacuums here to the speed of light in medium is absolute refractive index nm. It is represented also, mu is also represents this absolute refractive index of, this is mu. Okay, mu is refractive index. Mu you can write is mu. This is absolute refractive index. Now, fourth question.
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, fourth question is fourth question. An object is placed at a distance of 40 centimeter, distance of 40 centimeter in front of a convex mirror of convex mirror of radius of curvature 40 centimeter. List four characteristics of the image formed by the mirror. List four characteristics of the image formed by the mirror. एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर. लिस्ट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर. चूंकि बच्चों ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कही गई है, हियर दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द पोल ऑफ ए मिरर, और ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रहेगा. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज सी इज 40 सेंटीमीटर. ओके, तो ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड में रखेंगे, इधर किधर भी रखेंगे तो इमेज आपका वर्चुअल ही बनेगा. क्योंकि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज. यू हैव टू राइट द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स. वर्चुअल इमेज बनेगा छोटे साइज में बनेगा, डिमिनिश्ड साइज का होगा, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा. एंड इट इज हमेशा ये क्या होगा कि अगर पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आंसर यहां लिख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए कि इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, यू हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स. आंसर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज. इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच बनेगा. दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है 20 सेंटीमीटर. गिवन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, सॉरी यहां मेंशन नहीं किया हुआ है कुछ बात. ओके, कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, दिस इज 40 सेंटीमीटर, दिस इज ऑब्जेक्ट. तो कन्वेक्स मिरर में बच्चों हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा. हमेशा वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनेगा. तो फोर कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट इज इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. पोल और फोकस के बीच इमेज बनेंगे. ऑलवेज पोल एंड फोकस के बीच इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर. वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी पोजीशन क्यों ना हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच बनेगा. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, इट इज वर्चुअल. इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा. एंड थर्ड इज इमेज हमेशा अपराइट सीधा होगा, इरेक्ट. इमेज इज इरेक्ट. एंड फोर्थ इज डिमिनिश्ड. इसका साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा. दिस इज. तो कन्वेक्स मिरर में व्हाट एवर बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज पोल और फोकस के बीच बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिस्ड बनेगा। दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो बने हुए इमेज है, अगर आपके क्वेश्चंस में 40 के जगह 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं भी अगर कन्वेक्स मिरर की बात रहेगा अगर दिया होता तो हमेशा इमेज पोल और फोकस के बीच में ही ऑब्टेन होगा। इमेज चूंकि कन्वेक्स मिरर द्वारा बन रहा है इसलिए ये वर्चुअल होगा, ये हमेशा इरेक्ट होगा और बहुत छोटा साइज में होगा। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। Now, convex mirror always forms a virtual image. Fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन produced by a virtual mirror, by a spherical mirror, so by a spherical mirror, a spherical mirror, a spherical mirror is -3, -3 लिस्ट। आपको देखिए मैग्निफिकेशन जो स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस करता है उस वो मैग्निफिकेशन है -3। यू हैव लिस्ट फोर इंफॉर्मेशन, आपको 4 इंफॉर्मेशन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आपको कौन से 4 इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं? तो बच्चों मैग्निफिकेशन एक स्फेरिकल मिरर जो -3 प्रोड्यूस कर रहा है, तो what type of information you get from this statement about mirror and image, about mirror and image. Okay, so first information what you get is that is image is real and inverted. My magnification अगर negative है then you mean that image is real, image is inverted. When magnification is negative तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आप प्राप्त करते हैं? एंड फर्स्ट इज इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, दैट मीन्स इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, अब मिरर किस तरह का होगा? ऐसा रियल इन्वर्टेड फॉर्म करने वाला तो कनकेव। कन्वेक्स तो कभी वर्चुअल इमेज ही हमेशा फॉर्म करता है। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर आल्सो फॉर्म्स वर्चुअल इमेज बट सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां सिचुएशन -3 है और इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मींस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। एंड सेकंड, मिरर कैसा है? मिरर इज कनकेव। ये एक मिरर जो यूज हुआ है ये है कॉनकेव। योर मिरर इज कॉनकेव मिरर। ओके, अच्छा, sixth question is now
Sixth question is, sixth question. A girl in the mirror laughing house. In the mirror laughing house. Laughing house. Girl in the mirror laughing house. Find her face. Find her face appearing. Her face appearing highly magnified. Highly fight. Okay. Highly magnified. Lower portion of her body. Lower portion of the body of the same size. Of the same lower portion of the body of her body of the same size, but laterally inverted. Laterally inverted. But laterally inverted. Okay. And middle position of the body is highly diminished. And middle position of her body of her body is highly diminished. Highly diminished in size. Can you guess the design of the mirror? Can you guess the of the mirror? मिरर के डिजाइन के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या गेस कर सकते हैं? एक गर्ल है इन द मिरर लाफिंग हाउस, जहां आप लाफ कर रहे होते हैं, मिरर है वहां पर. फाइंड हर फेस अपीयरिंग, वो अपने फेस को देखती है कि बहुत बड़ा उसका फेस दिखाई दे रहा है मिरर में. अपीयरिंग मैग्नीफाइड, मतलब ऊपर वाला पोर्शन जो था क्या था? हाईली मैग्नीफाइड. ये फेस पूरा मैग्निफिकेशन करके बता रहा है मिरर. एंड लोअर पोर्शन ऑफ हर बॉडी इज ऑफ द सेम साइज, मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है उस मिरर में सेम साइज का आता है. ओके. एंड मिडिल पोजीशन ऑफ हर बॉडी इज हाईली डिमिनिश्ड, बीच वाला पोजीशन एकदम छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब फेस इज दिस मच. ओके. एंड इसका मिडिल पोजीशन जो है हाईली डिमिनिश्ड हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है. मिडिल पोजीशन ऑफ हर बॉडी इज लाइक दिस मिडिल पोजीशन. और नीचे वाला पोजीशन ऑफ द सेम साइज, नीचे पोजीशन जो है सेम साइज. ये फेस थोड़ा मैग्नीफाइड आ रहा है. तो मैग्नीफाइड इमेज कौन सा मिरर फॉर्म करेगा? विच टाइप ऑफ मिरर यू कंक्लूड फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इमेज फेस का? तो नेचुरली अपर पार्ट ऑफ मिरर क्या होगा? कन्वेक्स मिरर तो छोटा बनाएगा इमेज. ओके. और कनकेव मिरर बड़ा बना सकता है. वेंटिज प्लेस्ड करते हैं उसको फोकस और ऑप्टिकल पोल के बीच में. कन्वेक्स मिरर छोटा, प्लेन मिरर ऑफ द सेम साइज. तो तीनों मिरर में से कौन सा इमेज होगा फेस के लिए? तो फेस के लिए जो मिरर होगा वो होगा कॉन्केव मिरर. दैट इज अपर पार्ट ऑफ मिरर इज, जो जिस अपर पार्ट, जिस मिरर का पोर्शन होगा, ऊपर वाला पोर्शन, वो कॉन्केव होगा. बट आंसर दैट इज गेस डिजाइन ऑफ द मिरर. ये किया जा रहा है द गेस डिजाइन ऑफ मिरर. द
guess answer, guess design of the mirror means upper portion of mirror क्या होगा, वो होगा the upper part of mirror is concave. The upper part of the mirror is concave. Upper part of the mirror is concave. मिडिल पोर्शन छोटा डिमिस्ड हो जा रहा है, मतलब कि मिडिल पोर्शन एकदम छोटा हुआ, दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉन्केव. कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स. द मिडिल पार्ट, अपर पार्ट वाला कॉन्केव, मिडिल पार्ट वाला कॉन्वेक्स. मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर इज व्हाट, कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स ही डिमिस्ड. और नीचे वाला पोर्शन क्या कर रहा है कि नीचे वाला पोर्शन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है. लोअर पोर्शन ऑफ द हर बॉडी सेम साइज बट लैटरली इन्वर्टेड. लैटरल इन्वर्टेड प्लेन मिरर ही बनाता है. तो लोअर पोर्शन ऑफ द मिरर इज प्लेन. यहां पहले बीच में लोअर पोर्शन की बात कर रहा है तो लोअर पोर्शन ही लिखेगा. द लोअर पार्ट ऑफ द मिरर इज प्लेन. द लोअर पार्ट, the lower part of the mirror is plane. Okay, here lower part has no change, but middle portion of the mirror क्या हो जाता है, the middle part of the mirror, the middle part of the mirror is part of the mirror is plane. Mirror is middle part of the mirror is convex, not plane. ये मिडिल पार्ट डिमिनिश हो रहा है, डिमिनिश्ड इमेज कॉन्वेक्स बनाता है. अपर पार्ट जो होता है वो बड़ा दिखा रहा है, दैट इज कॉन्केव. एंड लोअर पार्ट ऑफ द मिरर इज ऑफ द सेम साइज, सो इट इज. यहाँ जो है प्लेन मिरर द्वारा बन रहा है, मिडिल पोर्शन जो है वो कॉन्वेक्स द्वारा बन रहा है, एंड अपर पार्ट जो है वो बन रहा है आपके कॉन्केव मिरर के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो बच्चों ये चैप्टर दैट इज 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का प्रैक्टिस लेक्चर 5 यही समाप्त करने जा रहे हैं. अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे. तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तब तक थैंक यू.